If your ad is creating a new behavior, it is transforming how people go about their daily lives, then आप जीत गए हो. Every good piece of advertising is rooted in a strong consumer insight. Difference between marketing and branding. The core of Apple is to do things differently, right? I think their original line was think different. That idea is the branding aspect of it. Marketing is everything else that they do. Top 2 or 3 qualities that sets apart a crazy marketer from a regular marketer. Most important thing, of course, is empathy. The other sort of quality that I would probably see is curiosity, because if you are not curious, you will stick to the tried and tested. Do you think social media also have a life and it will go? You would have designed a lot of campaigns, right? Which of the one that you feel where you have leveraged technology? There was a campaign that we did at Web Chutney called Walk the Line. For which brand? For Bacardi. Let's look at another ad, which is one of my favorite, Vodafone Zuzu. What was the marketer thinking? साकेत, बहुत मज़ा आएगा आज. गेम ऑफ मार्केटिंग समझने वाले हैं आज आपसे. मैं भी यही आशा रखता हूँ. You are a very interesting artistic person, I guess. Thank you. I think I am attracted to art. I am more of an art appreciator. I think when it comes to creating art, probably I had a stint with writing some time ago. But I think for now, I think it's about appreciating and imbibing art. Amazing. पहले तो फटाफट से just give an intro, what you do, who you are, and then we will jump into the game of marketing. But just to set some context, the reason I was so excited about you having here is obviously because of your experience, your expertise in marketing. You're building a company that helps other brands in how to do marketing better, how to advertise better, how to do branding better, and इतने सारे ब्रांड्स के साथ आपने काम किया है, उनके कैंपेन्स डिज़ाइन किए हैं जी. तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं आपके साथ. वो ये कि वी आर ऑल्सो गोइंग टू रिव्यू फ्यू एड्स दैट आर आइकॉनिक, दैट आई एटलीस्ट रिमेंबर फॉर अ वाइल आई एम ग्रोइंग अप, एंड आई वांटेड टू नो व्हाट देयर ब्रीफ वाज व्हेन दे वर डिजाइन्ड. Sure. What would you do differently when you are supposed to design them today? I mean, we can attempt that. Yeah, so that people who are listening to this get to know why and how a ad is designed, what do they keep in mind, and more importantly, how they can do it themselves if they are designing for their own companies or brands. Sure. And how they can even appreciate ad, because I believe ad is also an art. Absolutely. I think Right? I absolutely love ads, and I think appreciating ads is something that not everyone can do, but if somebody is associated with the advertising community, वो कहीं ना कहीं एक ad appreciation आपके अंदर आ जाता है. So everybody is a cord cutter, right? I think people have kind of given up their DTH connection or what have you. मतलब हर किसी के घर में जो टीवी होता है ना, मम्मी पापा देख रहे होते हैं. हम लोग तो नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार और सोनी लिव पे जी रहे होते हैं. तो एंड इट सो हैपन्स दैट द एड्स दैट वी गेट एक्सपोज टू are mostly pre-roll ads, probably sometimes, which kind of show up when there's a sports tournament, because every other piece of content which is on-demand content, there are no ads with respect to that. I mean, at least if you pretty much bought the premium version of whatever you're watching, there are no ads. मतलब YouTube भी हर किसी ने premium खरीद रखा है, तो YouTube पे भी नहीं दिख रही हैं ads. तो and especially when it comes to my work, right? I think to be working in advertising and not being exposed to ads, and then actually looking for ads on YouTube and watching them while at work, जा के देख रहे हो. So I told my wife the other day कि मेरे को ना DTH कनेक्शन खरीदना है, and my wife is like कि क्यों खरीदना है, मतलब क्या ज़रूरत है. So I'm telling her कि यार मेरे को ads देखनी है. Who buys DTH to view ads? Yeah, so I'll probably end up doing that, I think, very soon. I've been trying to sort of sell her on this idea. Now she just agreed that I can get a DTH connection, but not in the TV in our bedroom, probably in the one on the living room, कि मैं अपना जाके जब मर्जी वहाँ पे जाके देख लूँ और अपना जो भी मेरे को ad देखने का शौक है वहाँ मैं पूरा करूँ. If your wife can agree to 22 cats, yeah, I'm sure she can easily agree to a DTH connection. Yeah, absolutely. I think she is very gracious. But अब थोड़ा सा अपने बारे में बताओ. Who you are? What do you do? So yeah, of course. My name is Saket Vaidya. I currently run an agency called Korra. I am the Chief Executive Officer of Korra. It's a company that I was instrumental in starting back in 2017. So it's been 7 years that
I have been associated with Korra. I think for the first, pretty much for the first 6.5 years, I was running it in the capacity of a chief operating officer. I've taken on the CEO role or the CEO mantle recently, and I think I've been tasked with taking the organization to the next level and basically realizing the vision that we have for the organization. But if I have to talk about my life before that, I've basically been an advertising guy through and through. I think the first 5 years of my career, I think, were spent doing recruiting, something very, very far removed from what I'm doing since 2006 or 5, if I'm not wrong. So since 2005 and 6, I've been associated with advertising, I think, and it's been 20 years now. And I don't think मैं और कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मुझे शायद यही आता है अब. But it's been a fantastic journey. I think I've had the chance to work with organizations like Web Chutney, followed by Leo Burnett, all of them fairly longish stints. Yeah. But I think for the past 7.5 to almost 8 years, my life is Korra, and I think that's what I believe it is going to be for the foreseeable future. Was that intentional to keep it Korra so that people think it's QUARA? The one that's like the portal? No, actually that was an oversight, and that's like a problem that we seem to be struggling with. See, the intent behind starting Korra at the time was the fact that the people who started Korra, including me, all of them came in from the network agency ecosystem. When I say network agency, there is always a big 4 or big 5 of everything, and that's pretty much the case. In your case, these are Group M and all, right? Yeah, Ogilvy. in the case of advertising, that's of course WPP, which covers Group M. There is Omnicom, there is Interpublic Group, and of course there are sort of challengers. Challengers like Dentsu is trying to become an ad network, and I think it's found pretty much a lot of success there. But yes, I think WPP, Publici, Omnicom, and then Interpublic Group are the 4 sort of agencies. So all of them kind of operate this ecosystem wherein I think there is a set of rules and boundaries that agencies have to operate, and I think they need those rules and boundaries. I think it's kind of it's something that you learn along the way. But back then when we were working in those organizations, we were really frustrated when we couldn't hire the people that we wanted and do things that we wanted because everything was controlled by the top 2-3 guys. Yeah, not the top 2-3 guys, but the global infrastructure or the ecosystem. Although I have come to appreciate that side of the world as well, I think going forward. But so the idea was to break free of some of those constraints. The other aspect, of course, was that agencies and their ecosystems were very, very, very focused on the medium as opposed to the message, and that's just the way things were, right? This was because this was before digital sort of became mainstream. I think it's been argued that digital became mainstream back in 2010, but I mean it's almost like a coming of age story जो कि हो ही नहीं रहा है, मतलब पता नहीं कब होगा. But my feeling is that so offline, do you think still rules? Absolutely, it does. But there's a larger story there. So the point I'm trying to make is that there were agencies which were in different molds. So certain agencies were like specializing as digital agencies. Some agencies were focusing on TV. Some were doing events. And you were pretty much limited by the medium that you excelled in. Whereas our idea was to sort of look at building an organization that was free from baggage, free of preconceived notions. तो जो उर्दू में या हिंदी में कहावत है कोरा कागज, we actually took inspiration from that phrase and therefore the name is Korra. Right, interesting. But आपने बोला that you were previously as the role of COO. Yes. Now you're CEO. Yeah. Right. Yeah. पहले तो by the way we are going to play this Zenga game. Absolutely. As we talk. So my turn is done. It's your turn now. I'm looking whenever at that you are and free. I'm contemplating. I think which one to pick. I wanted to know. Yeah. What do you think is the major difference if a 20-year-old wants to know today? What's the difference between CEO and COO? How will you explain it? Okay. So of course there are two sides to running a business, and I think one of the sort of core aspect of running a business is to manage the operations on a day-to-day basis.
When I say manage the operations, is of course every month you are kind of running the organization, you are sort of generating certain revenue, you are incurring certain expenses. Those revenues and those expenses result to a profit or a loss, and of course there are different teams that are kind of working for you, and all of them have got different synergies. It's about keeping things running efficiently at that. That essentially is the role of a COO. Now there is of course an overlap with the CEO role as well, but the CEO role is then sort of, I think, more geared towards taking the organization forward in whichever direction that it has to go. And so CEO sets the pace, COO follows and makes sure whatever CEO has set it. I mean, yeah, there's a vision that the execute CEO, it. the vision that the CEO defines, the CEO helps execute it, and at the same time, I think a CEO also focuses more strongly on some of the growth aspects of the organization, whereas the COO is very, very focused on making sure that whatever is done is being done right. Which one do you like though, out of these two? I mean, very obviously, there's a natural progression that, I mean, if you are a COO with an organization for some time, your next role that you look forward to will be that of a CEO. So it's not so much so of which one that anyone likes, but one does lead into the other, unless you are kind of, and that's because that's if you're a generalist, right? Unless you're specifically specialized into something very, very sharp like sales or whatever, and then probably you want to then, instead of growing horizontally, you'll then grow vertically. You'll probably be a sales guy with another company, or you probably will do even more sales and make your company bigger. But I think there's a natural progression between the two of these roles, is what I believe. But you are a natural marketer, right? I'm sure you have created a lot of campaigns. Absolutely. Yeah. So I definitely think that, I mean, I am a natural marketer, and but I wouldn't have said that I was a natural marketer probably 15 years ago. So it's not something that I set out to do. I did not sort of get formal education in marketing and said that I want to do marketing. It's something that I discovered along the way. How? And I realized that I was pretty good at it. So how did I discover marketing? Yeah. So of course I was doing something else. Like I said, I was doing recruiting and more on the technology side of things, and that's when I was also, I think, a hobbyist blogger. I was one of the kind of first few bloggers in India. I'm not sure which one, but definitely I was one of the first few bloggers in India. At the time when I started blogging, there probably were only like a handful of names doing it, and the organization that kind of first gave me my break in advertising was a company called Web Chutney. That organization was also kind of ahead of its time, and they figured that this blogging thing is going to become very important. And this was a time when the phrase social media did not exist. Only the blogging things were existing. Only blogging existed. Social media as a concept did not exist. So Web Chutney wanted to sort of start a social media practice. So they were so visionary that, I mean, the social media practice probably started properly in maybe 2007 or 8 when Facebook and became a thing. Before that there was only Orkut and what have you, and before that there was only blogs. But I started the job of a social media marketer or a social media analyst in 2006 by the virtue of being a blogger, and it was a tough task explaining to people कि मैं करता क्या हूँ, and it was also a tough task explaining to clients कि ये medium आपको कैसे help करेगा. So some pioneering work in social media is something that I was fortunate to do, and that kind of naturally informed and advised my journey into the world of advertising and marketing. I already had like a technology background, so I had like a fairly largest stint as a technologist within an advertising company, trying to harness technology to sort of deliver solutions for advertising purposes. Like, does it really help you if you have a technology understanding to make great ads? Absolutely, I think. How did it help you? Koi example though, like one of the campaigns that would have never been done if you were not good at technology. So it's not so much so about me being good or not good about technology. I think. Or maybe I'll rephrase this. Yeah. Let's say you would have designed a lot of campaigns, right?
which of the one that you feel where you have leveraged technology? Fair. Yeah. So, I mean, I'll talk about, of course, from Web Chutney days alone. I think if you just have to talk about leveraging technology, right? And I think I had a colleague back then, and I think he still continues to be running rampant in this space. A gentleman called Gurbaksh Singh. I think he runs the whole tech and innovation piece currently at Dentsu right now. But back then, back in 2012 or some year like that, I think there was a campaign that we did at Web Chutney called Walk the Line. And the idea of which brand? For Bacardi. Okay. And the technology which was being used was essentially laser sensors. And so we had, like, back then the IoT was a very, very new concept, and there's something called Arduino, and with it you can sort of have microprocessors which kind of help you figure out whether a laser has been touched or not. So with that we actually built like a ramp with two lasers on either side, and installed it with different sort of bars and restaurants to help people understand how drunk they were. So if they kind of managed to sort of cross the laser, which meant that they were drunk, and then they should take a cab and they should go home. And this was done for Bacardi. Back then it was quite the rage, and that's quite memorable. But like that, there have been several sort of campaigns which have kind of used and utilized technology to do something interesting. And this is of course more on the gimmicky side, but in fact I was also involved with pretty much creation of India's first branded marketplace. I wouldn't say first, but one of the early branded marketplaces for e-commerce, because this is when there was no Amazon, there was no Flipkart, there was nothing. And that's when I think Tanishq, which was a part of the Titan group of brands, they came to us and they said that we want to sort of build an e-commerce website to sell gold jewelry online. That was in 2000? This was back in 2006 or 7. And that was insane. And they wanted to have dynamic pricing, that there'll be an API which will push the rate of gold. And then based on that, you will then price those products online on the shop, and people would actually buy. And हमने लगा नहीं था कि हम बना पाएंगे, हम भी सीख रहे थे उस टाइम पे. बट जब वो बन गया और एक साल में कितने सारे करोड़ों की ज्वेलरी बिक गई उसके ऊपर, तो हमें बहुत अच्छा लगा. That's crazy. In 2006 people were buying jewelry. 2007, yes. 2007 still. Buying jewelry based on dynamic gold pricing, कि आज कोई चीज इतने रुपए की है, कल वो बदल जाएगी क्योंकि वो gold rate से linked है. At that No, time? it was not easy at all. I mean, it took about 9 months to develop. We used to joke कि ये तो बच्चा पैदा करने जैसा है. But development aside, like, was it easy to sell jewelry in 2007 online? I would say that it was not, but there's always a time to start something, right? तो कहीं तो शुरुआत कर सकते हैं. In fact, we should be fortunate that I think the ecosystem today is so much more evolved, and things that you would have अब तो plug and play है. अब not तो 9 महीने imagined. वाला 9 दिन में होता. हाँ, 9 महीने वाला 9 दिन में होता है, and things that you would have not imagined are not now possible today. And there was a time when you would have wild ideas and say कि भाई ये तो हो नहीं सकता. आज वो नहीं है. अगर आपको वाइल्ड आइडिया आता है और अगर उस वाइल्ड आइडिया में दम है, देयर इज सम इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ टू दैट आइडिया, then that is eminently possible. मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो रुका हुआ है, because the human capital of the country has been unlocked, and I mean technology has enabled you to build anything. I think computing devices have gone up in power, and there is a lot of ecosystem that's sort of powering all of these things at the back, and pretty much everything is possible. Your turn. Sure. I have marked a piece. You already marked? हाँ जी. How were you spotting it? I've been eyeing it all this while कि अगला कौन सा होना चाहिए. Are you playing it like a chess? I don't know if it's chess, but yeah, I used to like chess was one of the games that I was very, very avid playing as well. मैं 2005 से लेके 10-11 तक खेलता था, and then again life happened, so I stopped. But yeah, that's something I enjoy. I still watch chess tournaments on Twitch and whatnot. हाँ. You watch Samay Raina's chess tournaments? हाँ जी, समय रैना का मैंने कभी कभार देखा होगा, बट मैं यूजुअली जब कोई भी टूर्नामेंट होती है ना, तो ये chess.com पे या ट्विच पे इसका ब्रॉडकास्ट आता है. यू गॉट लाइक लेट्स से हिकारू नाकामुरा आ जाता है कास्ट करने के लिए, एंड देन ऑल ऑफ दीस पीपल नाउ एवरीबडी इज सॉर्ट ऑफ इनटू दिस होल ब्रॉडकास्टिंग एंड लाइव स्ट्रीमिंग. What do you like chess? What do you like about chess? I mean, I like the fact that everybody has got the same resources, but it's what
but it's what you do with those resources. So basically unlocking the mind. Unlocking the Because potential. physical and monetary resources are constrained and same. So of course, I think that's the idea. So there is certain tangible value to one's resources, and there is a certain intangible value to one's resources, right? So if you look at a chessboard, I think all the resources have got a certain tangible value, right? A pawn is, I mean, like, not that there is any scoring, but in your mind, a pawn is probably worth 1 point, or a rook is worth 5 points or whatever. मतलब उसको उस तरह से भी देखा जा सकता है. But then it's not so much so that every pawn is equal to every other pawn. Depending on where that pawn is, on which square of the board that pawn is, and it's supported by which other piece, the value of that pawn suddenly goes up, right? And I think if it goes to the 7th rank, then that's a super invaluable pawn, whereas the pawn which is on the 2nd rank is not as valuable. So I think it's about looking at the tangible value of the things that you have, and understanding the intangible value which comes from positional play, which comes from so many other things, and what you make of it. And I think that's I mean, it's a game as old as time, and it's a game that, funnily enough, continues to evolve. But and it'll never be possible to solve chess in our lifetimes, or probably the lifetime of the Earth as well. I think. Is that the reason why people are still playing? That because it's not solvable? Absolutely. अगर कोई चीज़ solve हो गई है तो फिर खेलना छोड़ देंगे सब उसको. छोड़ देंगे. I believe, basis on what you like, I'm thinking you like Game of Thrones also. Yes, of course. I've read all And the books. Suits. Suits, I might have watched a couple of seasons, yes. Okay. I mean, I'm always attracted to that, this whole confident, well-dressed man archetype that is kind of prevalent in some of these shows. And the fact that, how do you create leverage? Yeah, of course, of course. Because the leverage thing that you mentioned about pawn, being in a certain position, that changes the whole leverage game. Absolutely, it does. And in Suits, this used to be the thing, like at one point you have certain leverage, which could be one pawn sitting in 7th position and becoming invaluable, while the same pawn, which is maybe a lawyer, getting some information, and now the same pawn is super valuable. Fair. I mean, if you talk about Suits, there is a quote by Harvey Specter, and he always says that don't play the game, play the man. And that is some advice that I end up giving to people in my workplace, although not in so many words. ये नहीं बोल रहा हूँ कि Suits में से टेपी हुई लाइन बता रहा हूँ तुमको, but the advice that I'm typically giving them translates into that. Crazy. ये बताओ कि, for example, in the blogging thing, you were doing blogging, right? And that has more or less ended now. Absolutely, it has. It ended 10 years ago, more than that, in fact, yeah. Do you think social media also have a life and it will go? I mean, social media will always continue to exist in some or the other form. But this must be the same what you would be thinking at that time about blogging. कि blogging रहेगी. Or were you always aware that blogging will go away? See, so that's where I think there's the nuance that we must discuss. So if the question is that will social media go away, the answer is no, definitely not. If the question is a certain format of social media will become irrelevant, the answer is possibly. So for example, you are differentiating between blogging and social media. For me, blogging is social media. Podcasting is social media. Or for example, posting on Facebook is social media. Tomorrow you might have a social media platform that's reliant on virtual reality and things like that. That will also be social media. So the idea of social media, that is not going away, because human beings are essentially social beings. If there are two things that they crave, one of them is content and the other is connections, and social media essentially offers that. So back in the day when there was the technology for it, blogging was cool. Now, of course, there are long form articles still there on the internet. Blogging still continues to be there. But because the technology has evolved to support richer forms of communication, I mean, there was an image era. Now it's the video era, and probably very soon the video era is evolving into, let's say, some sort of a mixed reality era where, you know, I don't know, maybe 10 years down the line, probably virtual worlds will become important and so on. So certain things are ahead of their time, but the innate need for content and connections will not go away. What do you think, what makes a great marketer though?
top 2 or 3 qualities that sets apart a crazy marketer from a regular marketer. So there are several qualities that you need to be a good marketer or a great marketer, and I think they can be. It'll be difficult to sort of count them कि कितनी होती हैं. But अगर मेरे को top 2 या 3 qualities की बात करनी है, तो I think ultimately it boils down to. And the first and the most important thing, of course, is empathy. And when I say empathy, I don't mean it in terms of a soft motherhood kind of a way कि मतलब भावनाएं और ये सब. Empathy. You are good at spotting. Empathy means, yeah, I would like to think that. Empathy means essentially being able to understand how others are thinking and feeling. Whether you choose to do something about it or not is. That is compassion. उसकी बात नहीं हो रही है. But who do you empathize to? To consumers who are going to look at the ad, or to the brand who is going to create the ad? Absolutely, to the consumers and their lived experiences. Every good piece of advertising is rooted in a strong consumer insight, and people need to be inherently empathetic to be able to understand those insights. If I have to talk about the other sort of quality that I would probably see is curiosity. Because if you are not curious, you will stick to the tried and tested. And the tried and tested is never great. I mean, it is good, but it can't be great. Great is something that is visionary, and I think we're speaking about campaigns that are memorable. Those won't happen if the person creating those is not curious. And the last thing, and I think it's more on the business side of things, more than the, let's say, the creative side of things, but it's as important that I think vision is very, very necessary. That you can be curious and you can be empathetic, but if the idea that you come up with does not have a basis in the real world, or if it's not viable, then it's not going to go anywhere, at least within the limitations that you have. So I think long-term vision and strategy of something sort of working on a technical standpoint, I think that's important. So again, if you have to sort of go back to 1, 2, 3, it is empathy, curiosity, and vision. I think these are the 3 qualities that vision and viability. Yeah, of course, viability being a subset of vision, make a great marketer. A lot of people get often confused with, and I've seen that happening with a lot of brands. Yeah. They don't know the clear difference between marketing and branding. Okay. I'm sure there is clear difference. Of course, right? I mean there's a clear textbook definition of what is marketing and what's meant by in your perspective, what's the difference? Maybe if you could explain me with an example. Okay. Branding is what happens when you do marketing right. Okay. I think. So, I mean, if you look at the textbook example, what is marketing and what is branding, right? Marketing is about communicating a message that needs to be communicated, right? And branding is about... कोई example हो ना brand का? If any brand that you think is doing good branding marketing, just any. Nike ले लो. हाँ, ठीक है. Yeah. Nike का जो marketing है, right? Is essentially, I think, while their marketing tagline is just do it, but their marketing campaigns will be the different campaigns that they keep doing month on year on year, the kind of people that they choose to associate with, and they chose to associate it with Michael Jordan, and then they sort of created this whole line of sneakers which everybody is crazy about, and there's a lot of bells and whistles and moving parts to that, and which is of course sequential. This has got sort of many implications. Now their entire sort of gamut is marketing. When people say branding, sometimes I wouldn't say confuse it, but they, among many other things, it of course means the imagery. So imagery need not be sort of only one kind of imagery, but first and foremost is typically your visual imagery, right? कि वो swoosh ऐसा होगा, उसके colors ये use करने हैं, उसका mood ऐसा होगा, उसकी vibe ऐसी होगी. ये सारे visual aspects of branding हैं, but the sort of if you go above and beyond that, the larger aspect of branding is what does it stand for, right? So, I mean, one could argue that Nike stands for an active lifestyle.
and they choose to embody that active lifestyle. So whether it's the tagline, which is just do it, or whatever campaign that they do, or the kind of people that they support, like and the kind of people that they choose for their campaigns, somewhere they kind of all reflect that. And because they've done those campaigns year on year on year, that's where an idea of Nike gets created. So the idea of Nike is basically the holy grail of branding, whereas everything that you do to achieve that is marketing. I mean, the same goes for Apple. If you had to look at what the idea of Apple is, I think the core of Apple is they like to do things differently, right? I think their original line was think different. Correct. And that idea is the branding aspect of it. Marketing is everything else that they do. But when do companies, let's say a 20-year-old is getting into business or maybe trying to become a marketer, right? When do they start looking at branding versus marketing separately? Sometimes when you start a company or start a business or you get into marketing, you don't really care about branding versus marketing. You just want to get more customers, right? You just wanted to get the ball rolling, get more sales so that your chimney is running. Absolutely. Right? But is it okay to not care about branding versus marketing in the early days, or you just have to do it right from the very first day? Honestly, it depends on what floats your boat, and I think what are your personal values. What would you do personally? And again, like I said, it depends on your personal values. So sometimes you are into a business because you deeply care about something. You are in a business because there is a certain purpose that you have in life, and your business, and with your business, you are trying to fulfill that purpose. And then branding kind of becomes, very natural and very core to that process. Sometimes you do it the other way around, but there is always some germ of an idea sitting somewhere. I mean, of course, I think when it comes to starting a business, it's important to take it off the ground, right? When I say take it off the ground, it's basically making sure that if you're a startup, then making sure that you've got your cash flow sorted and things like that, or if you're looking for funding or what have you. There are certain real world considerations when it comes to achieving critical mass. And to achieve critical mass, I think people try many different kinds of things, but at the same time, I think anyone who's ever started a business, they always have a why of doing it. I think it's important to sort of delve deep into that why, and maybe I think when you're comfortable, I think you can look at sort of shaping some of those things more strongly. There are some people who get into business who are already from, let's say, a creative background, or who are already from let's say marketers themselves, who are actually starting businesses, as opposed to someone who's an entrepreneur first and a marketer next. Then probably for them branding will come earlier. It depends on where you are in your life cycle. So to answer the question, yes, I think it need not be from day one, but there needs to be an idea, there needs to be a purpose which drives you. Why don't we just get into reviewing the ads now? Sure, we can do that. Let's do that. So we are going to review some crazy ads. The iconic ads. First of the ad that we are going to review is the Fevicol one. Sure. Because this ad ने ना मतलब बचपन से देखता आ रहा हूँ मैं इस ad को. Have you seen this ad? The sofa? Yeah. Of course. Let me play it for you. Yeah, I've seen the ad, of course. It's a lovely ad. It's a wonderful ad. It's a... This one. Yeah, of course. शर्मा की दुल्हन जो ब्याह के आई संग टू सीटर सोफा ले आई पड़ गयो नाम शर्मा इनका सोफा है. What do you think? What was the brief for this ad? Okay. So, see, I think different brands are sold differently, and I think this is a fantastic piece of communication, and I think but what I can sort of give a perspective from a category sort of standpoint, right? Now, Fevicol is an adhesive, right? कौन यूज़ करता है Fevicol? मैं और आप नहीं करते हैं. हमारे बच्चे करते होंगे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में, शायद कोई फेविक्विक से कोई चीज़ चिपका रहा है, या whatever Fevicol कहीं पे यूज़ होता है. But that probably represents a very small
part of the business for Fevicol, and therefore you probably see very very tactical and functional campaigns for, let's say, a consumer facing product like a Feviquick, कि फेविक्विक है जो मिनटों में चिपकाता है, उसमें कोई ऐसा मदरहुड नहीं दिया जा रहा है, कोई उसमें इमोशनल कनेक्ट नहीं किया जा रहा है, बिकॉज दैट्स अ वेरी वेरी शार्प एंड स्मॉल प्रोडक्ट कैंपेन. I think what Fevicol or Pidilite did here was, of course, I think I'm sure there are many adhesives on the market. All of these adhesives get purchased by people who are in the business of woodwork, contracting, industrial. तो essentially जो इसका consumer है ना, वो जो है वो B2C नहीं है, वो B2B ही है. Fevicol जो खरीदता है ना, जो बंदा जिसको woodwork करना होता है और जो लकड़ा का कारपेंटर होता है वो खरीदता है, तो consumer तो खरीदता ही नहीं है. But at the same time, I think whenever there is any sort of B2B product that you're sort of looking at, there are always sort of three aspects of that, who the consumer is, right? And there are people who are let's say process drivers, there are people who are decision drivers, and then there are people who are the actual consumers, right? What's the difference between all three? Process, decision, actual consumer, obviously we know. Yeah. In this case, the actual consumer will be carpenters. Or not? No, the actual consumer is the guy who's using the sofa. Oh, okay. So you're looking at from that angle. Yeah. So, and it's important to address each of these each of these sort of cohorts, right? And the thing is that if you want to build a brand in the long term, you have to address the actual consumer cohort, the end user cohort. कि वो Fevicol से चिपकाया गया सोफा जो है वो उसका final actual use. मतलब it's not the point of sale, it's the point of use. It's basically, so I mean this is an out and out branding campaign जो एक long term equity create करना चाहता है Fevicol जैसे ब्रांड के लिए. और जब आपके कैंपेन का पर्पस नहीं होता कि इस एड को देख के डायरेक्ट सेल्स एट्रीब्यूट होनी चाहिए, तब आप ना कुछ ऐसा कर सकते हो जो एंड यूजर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाए. एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल इनसाइट. मतलब ये ऐसा नहीं है कि सोफे की ऐड की बात हो रही है और इस ऐड के अंदर जो सोफा है वही सोफा है. हर किसी के घर में ऐसा कोई सोफा है. लाइक आई हैव गॉट अ सेट ऑफ टीक वुड सोफाज जो मेरे पास अभी 20 साल हो गए हैं और अब वो टूट ही नहीं रहा है. मतलब क्या करूँ, मतलब वो चल रहा है, अच्छी बात है, चलते रहेगा. आई एम श्योर मैं भी कोई ना कोई इनहेरिट करेगा मुझसे वो सोफा. सो दैट्स समथिंग दैट वी हैव सीन. एंड आई थिंक देयर इज ऑल्सो this feeling that as society kind of moves along, there is this nostalgia as a very very strong component, right? मतलब वो होता है ना कि हम पापा आपको बोलेंगे हमारे ज़माने में ना मतलब जो फल होते थे वो क्या मीठे होते थे यार, तुम्हारे आजकल के फल का कोई मतलब नहीं है. या हमारे ज़माने का फर्नीचर अच्छा होता था, हमारे ज़माने का समथिंग अच्छा होता था. सो पुराना equals good, as in not from a fashion standpoint, but purana equals good. If something that is stood the test of time, that's inherently kind of keying into the quality of the aspect, and that whole nostalgia being a very very strong driving factor was used to build an emotional connection. And so on the whole, I think it's not just this ad, but I think of course there are many ads that Fevicol has created, which talks about मजबूत जोड़ है नहीं टूटेगा. And again I think they've explored different aspects of it. Some of them are comical, some of them are human some of them actually explore human connections, which is what this ad does. तो सब कुछ करना पड़ता है. तो I think ये इनके लिए एक long term branding campaign था. And आप अगर इसकी बात नहीं करते हम लोग, अगर इसके जैसे अगर मैं आपको जो आप कह रहे थे ना प्रोसेस ड्राइवर कौन होता है, डिसीजन ड्राइवर कौन होता है, अभी शायद L&T सीमेंट का एक कैंपेन चल रहा है. आई एम नॉट श्योर किसने बनाया हुआ है. उसमें शाहरुख खान आता है. एंड वो ये दिखा रहे होते हैं कि आर्मी वाले जा रहे हैं और रोड बनी है ब्ला 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 ब्ला. एंड अब सीमेंट कौन खरीदता है? बिल्डर खरीदता है, कॉन्ट्रैक्टर खरीदता है. बट वो ऐड ये कहता है भाई कि हम रोड इसलिए बनाते हैं ना ताकि आप अपने घर जल्दी पहुंच सको. So it's very important for in a B2B context to understand that who your product is finally benefiting and then talk about that. So it completely gives a different spin to the concept. यार कि वो
वो सीमेंट मैंने उसके लिए नहीं बनाया जो सड़क बनाएगा, वो सड़क फाइनली बनाई है जो जो यूज़ करेगा उसको। तो अगर कोई पापा हैं जो ऑफिस से घर जल्दी पहुंच रहे हैं और उनको अगर अच्छी सड़क मिल रही है और वो टाइम से पहुंच पा रहे हैं उस सड़क की वजह से, तो बच्चा अगर पापा को 5 मिनट पहले आते हुए देखेगा तो उसके जो चेहरे पे खुशी होगी, कहीं ना कहीं वो L&T सीमेंट एनेबल कर रहा है। तो वो कैंपेन, आई डोंट नो उसका लाइन क्या है, बट समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ कि हम देश बनाते हैं, हम सीमेंट नहीं बनाते, हम देश बनाते हैं। सो आई थिंक दैट्स सो दिस इज ऑल्सो इन दैट sort of zone, although not as patriotic or emotional, but again tapping into the human condition. Let's look at another ad which is one of my favorite. Vodafone Zuzu. अच्छा, I'm sure देखी होगी आपने, आप जी। तो इसी फील्ड में हो। जी जी। You like the ad? क्यों नहीं देखी है सर, मतलब this is one of the most iconic campaign. Correct. You like the ad though? Absolutely. I mean, Let me play it. there is a series of ads, so it's not just one ad. Yeah, multiple series. Yeah, absolutely. So honestly, I can attempt to guess at What was the marketer thinking? What the marketer was thinking and what the brief was here. But I believe, specifically when it comes to telecom, right, it's a category that is very, very, very heavily commoditized. सबके पास वही टावर लगा हुआ है, वही टावर वही कनेक्शन देता है, वही 3G आता है, वही 4G आता है। अब किसी का 3G बेटर है, किसी का 4G बेटर है, किसी के पास ज़्यादा टावर है तो किसी की कनेक्टिविटी बेटर है। एंड देयरफॉर इट कैन बी आर्ग्यूड के मतलब ना एयरटेल का कनेक्शन जियो से बेटर होता है in theory. But if you sort of talk on those lines, I think those campaigns are also important. But you're also in a sense commoditizing yourself, right? कल वो ज़्यादा टावर लगा देगा तो फिर आप क्या करोगे, right? सही बात है। And telecom is a category when people once they get a connection they don't generally switch. मतलब हम आजकल तो कोई नहीं करता, आधार कार्ड पे नंबर आ गया तो ख़त्म हो गई, मतलब उसके बाद MNP है वो भी किसी को नहीं करना है। So यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ब्रीफ ये होगा कि एंड ये एड्स कब बनी थी, 2010-11 में बनी थी। टेलीकॉम रेवोल्यूशन जो है वो बिल्कुल शुरू हो रहा था, और जैसे आज इंटरनेट के साथ हो रहा है उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स के साथ हो रहा था। मोबाइल फ़ोन्स का तो 90% से ज़्यादा सैचुरेशन आज की तारीख में इंडिया में आ गया है, तब शायद नहीं था। तो हमेशा ये होता है कि आपका मार्जिनल यूज़र कौन है, आपका अगला यूज़र कौन है। तो कहीं ना कहीं किसी ने आइडेंटिफाई किया होगा कि जो मैसिव डेमोग्राफिक जो इंडिया में बढ़ रहा है वो जवान लोगों का है। मतलब बूढ़े लोग उतने ही रहेंगे बट जवान लोग और पैदा होते जाएंगे, एंड देयर इज ऑलवेज अ न्यू इनकमिंग स्ट्रीम ऑफ कंज्यूमर्स हु आर यंग पीपल, एंड द आइडिया इज टू कैच देम यंग। सो द आइडिया वाज टू आल्सो ड्राइव अपील to do something which doesn't really talk about the nitty-gritties of a telephone connection, right? Do something iconic which stays with you, which appeals to, let's say, a younger subset of people, and hopefully if you've got them on board on the strength of your brand, then they will stay with you, of course. I mean, if your service is terrible then they might eventually switch, but as long as आप जो बेसिक उनके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर रहे हो, एंड इफ जस्ट बिकॉज योर ब्रांड इज सो कूल दे माइट स्टिक विद यू। एंड आई थिंक दिस वाज आई थिंक अ न्यू यूजर एक्विजिशन कैंपेन एंड कैंपेन टू क्रिएट सेलियंस स्पेसिफिकली इन यंगर ऑडियंसेस। But what about the fact that picking up a character, specifying a character, do you usually look at, can you associate a character or avatar with a brand when you're designing an ad? Fido that you can always associate with 7up, I think वो 7up का जो बंदा होता था उसके Is that a conscious call all the time that you look at कि इसके साथ भी कुछ association करना चाहिए? Like for example when you're creating ads and that particular brand don't have a avatar or something like that, right, associated currently. So that's where I think this whole distinction between marketing and branding come in. अगर मेरा मैंडेट है, मेरा रेमिट है कि मेरे को ब्रांडिंग पे फोकस करना है, मतलब एक ब्रांड का नव निर्माण हो रहा है तो उस ब्रांड का एक मैस्कट भी होगा, उस ब्रांड का कुछ और होगा, तो मे बी दैट प्रॉबली इज समथिंग दैट विल कम अक्रॉस। But is mascot the first choice usually? Not necessarily. A mascot probably will become a choice when your category is either very commoditized or it is consumer facing or there is a light-heartedness about it. तो हो सकता है, बट मैस्कट इज़ अ फैंटास्टिक डिवाइस। लाइक अमूल की वो लड़की है जो हर एड में आती है, नाउ दैट शी बिकम्स recognizable and iconic, and of course I think a mascot can sort of do wonders for any brand. What about B2B though? Do mascots play a good branding role in B2B?
So, I mean, mascots pretty much play a good branding role in any category. But when it comes to B2B, the B2B2C implications have to be thought of first. कि मतलब भाई वो चाहे वो हम अभी जैसे ये रोड बनाने की बात कर रहे थे कि फाइनली वो यूज़ कौन कर रहा है उस रोड. Correct. तो जो मैस्कट है ना वो B2B में तो अपील नहीं करेगा, लेकिन जो बंदा वो एक्चुअली जो फाइनली यूज़ करेगा उसको अपील करेगा. तो विथ टाइम प्रॉबेबली ही माइट आस्क हिज कॉन्ट्रैक्टर कि भाई तुम कौन सा एडेसिव यूज़ कर रहे हो, मेरे को फेविकॉल ही चाहिए भाई, मेरे को ऐसा वैसा नहीं चाहिए. So the influence will come through that. Absolutely, absolutely. Okay, great. Let's review third ad, which is हाँ जी. another favorite. आपने वो जलेबी वाली ad देखी है जो बहुत फेमस है कि जलेबी ऐसे बोलता है ना बच्चा. Absolutely. मैं भी एकदम बच्चे की तरह बोल रहा हूँ. Do you think we all will remain forever kids? In a way? हाँ, हर किसी के मतलब दिल में कहीं तो बच्चा छुपा है, तभी तो grown men are playing video games. So. This is the ad. Of course. I think there are two. दो होती हैं. एक में वो रेलवे स्टेशन पे उसको वो पोस्टमैन भैया घर छोड़ के जा रहा होता है, पोस्टमैन भैया ले आते हैं, और उसमें एक में उसका भाई कि घर पे जलेबी बनी है. So and this insight, I think one of course is, I think, I'm sure the brand was trying to create something iconic, memorable. And again, this is a category where the consumer of the ad is, in this case, the woman of the house, right? आप नहीं खरीदते अपने घर में तेल. I'm not sure if you're married or not, but you probably don't make decisions with respect to which cooking oil to buy. So the decisions, of course, are made by the homemaker, who's kind of sort of running the house. And back then, women were less in the workforce, and a lot of them were actually full-time mothers. And one of the biggest things that a mother worries about, and I think this is true for this entire category, that and that's why you'll see so many children in all the food, चाहे आटा हो, चावल हो, तेल हो, कहीं ना कहीं बच्चा खुश हो रहा होगा. तो बच्चा इसलिए खुश हो रहा होता है क्योंकि मदर्स रियली केयर अबाउट देयर चिल्ड्रन ईटिंग. बच्चे खाते ही नहीं हैं. मतलब बहुत उनके नखरे होते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को पसंद नहीं आया, ये सब्ज़ी नहीं खानी है, वो सब्ज़ी नहीं खानी है. तो चाहे वो केलॉग्स चोकोज हो, बट बच्चा खाएगा इज समथिंग दैट ब्रांड्स वांट टू इनग्रेन कि भाई मेरे आपका पति खाएगा नहीं खाएगा वो कोई बात नहीं है, बच्चा खाएगा. एंड व्हाट बेस्ट to show is basically the whole child's endearing aspects and basically वो घर छोड़ के जा रहा है, थोड़ा सा quirk ज़रूरी होता है for memorability. And but the fact is that कि जब वो जलेबी बनती है तब वो बच्चा चाहे कुछ भी हो अपना घर छोड़ने का प्लान कैंसिल करके आ जाता है, and that's what he lives for. So I think if anything what the ad is doing the job of communicating is कि भाई ये आप धारा से अपने चाहे मीठी चीज़ें बनाओगे या जैसे भी चीज़ें बनाओगे आपको बच्चों को बहुत पसंद आएगा, और इतना पसंद आएगा कि वो घर छोड़ने का प्लान कैंसिल कर देंगे. सो दैट इज एग्जैजरेशन. एग्जैजरेशन इज आल्सो लाइक अ पार्ट ऑफ एनी एडवर्टाइजिंग इन द राइट कैटेगरी ऑफ कोर्स, बट आई थिंक दैट्स द इनसाइट, एंड आई थिंक दैट्स ट्रू फॉर चिल्ड्रन बीइंग centered on so many food ads are sort of centered on children enjoying meals. I wanted to ask you, what's your favorite ad though, out of all the ads that you would have seen so far? If I had to look at advertising that has happened in India, and I think I'm sure some of these ads will come up because that is equally iconic. I've always appreciated the advertising work that Cadbury's has done in this space. And why? Because when I was at this company called Leo Burnett, उनका ना एक टैगलाइन होता था, ये था कि क्रिएटिविटी कैन ट्रांसफॉर्म ह्यूमन बिहेवियर. और उस टैगलाइन का सब लोग मजाक उड़ाते थे कि बहुत बढ़िया टैगलाइन है, हर ईमेल सिग्नेचर के नीचे एक लाइन लिखी हुई है, किसी को समझ नहीं आता था कि क्यों लिखी है. इट वाज जस्ट अ थिंग व्हिच वाज देयर, राइट. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई एक्चुअली ग्रू टू admire that insight. So the insight there of course is that अगर कोई मैसेज को सही तरीके से दिया जाए और अगर कोई क्रिएटिव डिवाइस ऐसी हो जो इन्फ्लुएंशियल हो, तो आप you can change the way people behave. And therefore if your ad is creating a new behavior, it is transforming how people go about their daily lives, then आप जीत गए हो. मतलब, and to me that represents the epitome of advertising.
and I think with your permission we can talk about those ads. Yeah, of course. Why not? The first one of course is आपने वो ad देखा होगा You want me to play? Sure you can, but I think I pretty much remember them. तो एक तो है वो कुछ खास है जिंदगी कुछ में, खास right? है, हाँ, And there's this जिंदगी में। cricket match taking place, and Yeah. then there's a lady in the crowd, and she Correct, comes correct, out correct. and she shouts, does yeah. a little jig in the sort of field. That was one of the ads. And the other ad, of course, is a series of ads called Kuch Meetha Ho Jaye, centered around that. And I think let's talk about both of those one by one. I think Kuch Khas Hai Zindagi Mein, you need to understand that this was an ad created early 90s, probably late 80s. I'm not sure exactly what's the timeline of that ad. But that ad comes from a time when chocolates were perceived as children's indulgence. चॉकलेट कौन खाता है? बच्चे खाते हैं. आप अगर एक ग्रोन आदमी हो, अगर आप 40 वर्ष के आदमी हो या 35 वर्ष के आदमी हो, क्या आप चॉकलेट खाते हो? नहीं, ये तो बच्चों के खाने की चीज़ है. एंड कैडबरी ऑलवेज हैज़ बीन दिस ब्रांड दैट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ मार्केट लीडर, और जब कोई भी ऐसा ब्रांड होता है ना जो मार्केट लीडर होता है ना, दे कांट डू द ईजी थिंग. इफ़ यू आर अ चैलेंजर ब्रांड ना, आप हमेशा ये एडवर्टाइजिंग कर सकते हो कि भाई फलाने के से प्रोडक्ट से मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, कि आम इंश्योरेंस से मेरा इंश्योरेंस अच्छा है, मेरा इंश्योरेंस बेहतर कवर देता है, आम स्किन क्रीम से मेरी स्किन क्रीम बेटर है, बिकॉज लीडर कोई और है, आप चैलेंजर हो. तो आप जब भी चैलेंजर होते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि वो दूसरा वाला बंदा एडवर्टाइजिंग कर सकता है कि मेरी जो चॉकलेट है ना वो कैडबरी से अच्छी है, राइट. बट जब आप खुद लीडर होते हो ना, तो आप ये नहीं कह सकते. या तो आप ये कह सकते हो कि अब और भी अच्छा हो गया है मेरा प्रोडक्ट, which will have limited impact. That probably you'll do that kind of advertising if you're sort of trying to stave off competition or something like that. Or you are trying to look at newer people to challenge who are outside your category. So in this case, expansion of the audience and everything. And the expansion of the audience. So but do you think when you say leader, is that by all means just the market share or your perception about the market? बोथ आर वेरी वेरी क्लोजली टाइड टू ईच अदर. ऐसा कोई ब्रांड लीडर बन ही नहीं पाया है जो जिसका मार्केट शेयर भी रिफ्लेक्ट नहीं करता. अगर आपका माइंड शेयर है तो मार्केट शेयर भी है, माइंड शेयर इक्वल्स मार्केट शेयर. सो इन द केस ऑफ कैडबरी ऑफ कोर्स चिल्ड्रन ईटिंग चॉकलेट, वो कहीं ना कहीं उनको कम्युनिकेशन ये करनी थी कि बड़े लोग भी खा सकते हैं, एंड चॉकलेट खाना एक अपने लाइफ की एक मैं कहूँगा एक प्लेफुल साइड को एक्सप्लोर करने का तरीका है. एंड देयरफॉर दे हैव दैट बॉय गर्ल सिचुएशन. तब से लड़कों ने लड़कियों को चॉकलेट देना शुरू कर दिया कॉलेज में. करेक्ट. एंड वो कॉलेज में चॉकलेट डेज होने लग गए. सो दैट्स अ मैसिव बिहेवियरल शिफ्ट दैट ड्रोव. और जब वो कर चुके थे, उसके बाद ये हो गया कि भाई अब और कहाँ से आएगी सेल, अब इतना तो कर चुके हैं, अब और कहीं से लाना है. तो अब किसको चैलेंज करें? तो अभी हम लोग मिठाई को चैलेंज करते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी क्या है प्रोडक्ट के कंजम्पशन की? स्वीट्स का ही है. और तो कहीं बाकी तो जो कॉलेज में रोमांटिक करके तो सबको खिला दिया. तो अब सो देन दे डिड दिस रियली आइकॉनिक कैंपेन कॉल्ड कुछ मीठा हो जाए. और फॉर एग्जांपल पप्पू पास हो गया, और थिंग्स लाइक दैट, वेर इन वट एवर, लाइक अगर स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं तो चॉकलेट खा लो, या कुछ अच्छा हो जाता है तो चॉकलेट खा लो. एंड दैट कुछ मीठा हो जाए और वट एवर वॉज वेरी वेरी आइकॉनिक अगेन, बिकॉज it recontextualized chocolate as something that can be consumed for celebration in a traditional setting. Because meetha ho jana is a very very Indian cultural thing, right? कि शादी की बात पक्की हो गई तो मीठा हो जाए, या बच्चा पास हो गया. So it's a very very cultural and a very very traditional way of celebrating कि मिठाई खा के लोग सेलिब्रेट करते हैं. तो आई एम नॉट श्योर कि मिठाई का मार्केट शेयर कितना डेंट किया, बट अपना मार्केट शेयर इन्होंने काफ़ी इंक्रीज किया बाय कंप्लीटली क्रिएटिंग अ न्यू मार्केट एंड फाइंडिंग अ न्यू बिहेवियर फॉर द प्रोडक्ट. What will they do next? What do you think? If you would have given the mandate to now, कि यार अब हमने मीठा भी रिप्लेस कर दिया, let's just say, we have replaced girls boys situation. How will you expand it to a next level now if you would have given the mandate? देखो कहीं ना कहीं तो उनको प्रोडक्ट इनोवेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि शुगर अपने आप में बहुत बड़ा मतलब
the way society is kind of evolved, sugar the is way seen food as the farmer is doing campaigns. sugar is seen as the enemy. So Yeah. of course, I'm sure they are seeing some headwinds. Yeah. I'm not sure though, but so there are two opportunities for Cadbury, right? One is that मैं और आप तो खा रहे हैं Cadbury chocolate. मुझे नहीं पता कि रूरल मार्केट्स में लोग कितनी चॉकलेट खा रहे हैं. तो एक चीज़ वो कर सकते हैं कि वो अपने एडवर्टाइजिंग को और लोकलाइज कर सकते हैं, मे बी मिडिल इंडिया के ऊपर फोकस कर सकते हैं और अगेन नए ऑडियंसेस ढूंढ सकते हैं. बट शायद वो ऑलरेडी कर चुके हैं, मुझे नहीं पता कि सेल्स नंबर्स क्या हैं और कितना रूरल है कितना अर्बन है चॉकलेट का सेल. बट एक तो वो कर सकते हैं. दूसरा वो कर सकते हैं, विच इज़ आई एम नॉट श्योर हाउ मच ऑफ दैट रीच दैट वुड बी, इज़ दैट या तो आप नए लोग ढूंढो जो आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, या तो उन्हीं लोगों से ज़्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम करवाओ. और ये आपने क्लासिकली देखा होगा. विच इज़ ईजियर तो दोनों अपने आप में यूनिक चैलेंजेस हैं, राइट? तो देयरफॉर आपको पोटेंशियल देखना पड़ेगा सर कि क्या करना इजी है या दोनों करने चाहिए या एक के ऊपर फोकस करना है या नहीं करना है. लाइक फॉर एग्जांपल यू विल सी दैट व्हेन इट कम्स टू टूथ dental care, Colgate is a leader, right? And you will see that some of their campaigns are on the lines of कि आप रात में ब्रश करते हो नहीं करते हो, दिन में 2 बार करो. दिन 2 बार करो. तो अब वो क्योंकि भाई हर कोई कोलगेट खरीद रहा है, सही बात. तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई, तो 2 बार करो पे जोर अभी डालना पड़ रहा है उनको. तो सिमिलरली अगर कैडबरी को करना है तो क्या पता कैडबरी क्या कुछ ऐसा कर सकता है जिससे लोग ज़्यादा चॉकलेट खाएं. मे बी वो प्रोडक्ट इनोवेट करे जिसमें चॉकलेट ऐसी हो जो जिसमें ज़्यादा कैलोरीज ना हो, या मे बी कोई शुगर फ्री चॉकलेट निकालें. हाँ, प्रोटीन ज़्यादा हो, कुछ करें और बोलें कि भाई इस चॉकलेट को आप ज़्यादा खा सकते हो. That's just spitballing के मतलब ये होगा नहीं होगा पता नहीं. But of course I think we'll have to sort of get into where they are as an organization and see what the challenges are to sort of think of what they should be doing next. Out of all the campaigns that you have personally designed, right, and executed, which one is your personal favorite? And मुझे थोड़ा सा ये बताओ, what was the mandate, if you can obviously talk about it publicly, and how did you arrive at understanding the consumer insight and then figuring out what to do? Fair. वो बताओ. And while we do that, it's your turn by the way. Okay. Let me just. Now you haven't spotted. नहीं देख तो लिया लेकिन उस तरफ है वो. You want me to help? नहीं ठीक है. नहीं ये नहीं है. Okay. Safe. Yeah. Yes, the campaign. Okay. I mean, I've been at Korra for the past 7 years, and I think if I have to talk about campaigns, of course, I think from recent memory, it has to be the campaigns that we've done as an agency. This is, of course, I think one of the things that kind of made Korra stand out. Probably at the during those COVID years, I think, and we also kind of captured this image of being an agency for D2C brands. It's something that I think we are really good at. But at the same time, I think it's something that we're also kind of seeking to outgrow, so it's a challenge. But I think in between 2019, I would say, or 20 if I'm not wrong, and 2023, for almost 3 or 4 years, we were the agency on board for this brand called Mama Earth, and I think they've seen like a massive success in what they sort of have done. I think obviously they weren't as large an organization when they first started working with us, and I think their growth has been phenomenal, and somewhere we're kind of part of their journey, I think. But I think the early work that we did for that brand when it came to their brand promise or proposition of goodness inside, and what does that really mean, अच्छाई क्या होती है, अच्छाई क्यों होती है, and being able to kind of distill that to goodness being good actions that people take. And we produced several pieces of advertising for them at the time, and it's definitely, I think, something memorable that we did. We were also associated with a brand called Bata for a few years, and this was at the cusp of Bata being looked at as probably an older person's brand. And there is certain work that we did specifically when it came to the category of sneakers. We created a property called Sneaker Fest, wherein I think this was this massive festival of sneakers, and the
core message was to, of course, the fact that Bata is a young brand which has got all these sneakers, and then if you're a young person and you like sneakers, then Bata is sort of one thing to consider. So basically, just making the profile of the brand younger. But do you always, for example, when I heard the name Bata, Yeah. I associate that name personally with a formal shoe. Of course, that still remains the challenge. Correct. So how do you break that barrier? The mindset that for so long have been formal shoes to the sneakers. Yes, Sneaker Fest was one of the ways to do that, right? Yeah, yeah. But are people still associating Bata with formal shoes or sneakers? Isn't it difficult? Bata will continue to be a leader in formal shoes, and that's just what the brand is, and that's the ethos that the brand has managed to play on. One thing that you must understand, that a brand like Bata is not married to the idea of being a formal shoe brand. उनको जूते बनाना आता है, वो फॉर्मल शू भी बना देते हैं, वो कुछ भी बना देते हैं, वो स्पोर्ट्स शू भी बनाते हैं. उनके पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं. जो पावर करके उनका एक ब्रांड है जो स्पोर्ट्स शू बनाता है. मारी क्लेयर करके एक ब्रांड है विच इज़ वुमेन्स फुटवेयर. सो देव गॉट मैनी नॉर्थ स्टार फॉर दैट मैटर इज लाइक व्हाटएवर कैनवस शूज एंड स्नीकर्स एंड थिंग्स लाइक दैट. तो उनके पास बहुत सारे सब ब्रांड्स हैं. ठीक है, तो ऐसे तो है नहीं कि भाई उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तो फॉर्मल शू ही बनाता हूँ. वो जूते बनाने वाली कंपनी है. Their purpose is basically to make sure that people have got footwear that is comfortable, affordable and trendy at the same time, and उनको इन लोगों तक के जूते पहुंचाने हैं. अब उन्होंने ये स्नीकर का कैंपेन क्यों कराया, क्यों महत्वपूर्ण हो गया ये स्नीकर का कैंपेन करना उस समय पर? क्योंकि आप तो सारे टाइप के जूते बनाने के लिए आप सक्षम हो, लेकिन अब जनता जो है वो फॉर्मल जूते खरीद नहीं रही है. वैसे भी कोविड आ गया है, मतलब फॉर्मल जूते कोई पहन नहीं रहा है. अगर कोई जूते पहन रहा है तो स्नीकर पहन रहे हैं. अब स्नीकर कौन बना रहा है? तो वो नाइकी एडिडास वाले लोग बना रहे हैं. उनके ज़्यादा बिक रहे हैं, आपके कम बिक रहे हैं. आपके पास क्या चीज़ है अगर आपके शायद आप उनको प्राइस पे बीट कर सकते हो आप, बट आपकी ड्रॉबैक क्या है कि लोगों को लगता है कि आप कूल नहीं हो. तो अब वहाँ पे बेसिकली बिजनेस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और फिर जो सही प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो. वहाँ पे सही प्रॉब्लम जो सॉल्व करनी थी कि ब्रांड को कूल बनाना था, तो अब वो कूल बना रहे हैं. आई थिंक वी प्रीटी मच स्टॉप्ड वर्किंग विद देम लास्ट ईयर, बट अभी भी वही कर रहे हैं, कूल बन रहे हैं वो. तो डिपेंड करता है आप कहाँ हो अपनी जर्नी में, और आपके एक्चुअली मार्केट के चैलेंजेस क्या हैं और आपके प्रोडक्ट चैलेंजेस क्या हैं. आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वी ट्राई टू डू एज मार्केटर्स इज दैट वी डोंट रियली, आई मीन, एक होता है कि भाई ब्रीफ दे दो, बता दो, कर देंगे. एक होता है कि आप उसकी तह तक जाओ, पता करो कि हो क्या रहा है, एंड देन ट्राई टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम. अगर आप अपना फोकस बिजनेस प्रॉब्लम पे रखोगे तो बाय डिफॉल्ट अच्छी एडवर्टाइजिंग बनेगी. The objective has to be clear in mind. Absolutely. Not just for the ad, but overall outcome of the business. Yeah, what is the tangible business outcome that you're trying to drive? But in the beginning, you said offline is still more than the online ads, right? Are you talking about the ad spend, or are you talking about the impact? I wouldn't say that it is more. In fact, latest data shows that digital ad spends are now 55%. It's more than the offline spend. तो बहुत टाइम था, मतलब जब तक हम लोग, and that's why we had this conversation about digital growing of age, and like it's like and this growing of age conversation is a very sort of long standing conversation. तो basically जब हम शुरू में डिजिटल में थे ना, तो हम लोग बोलते थे कि यार 200 मिलियन लोग हैं डिजिटल के अंदर, और भारतवर्ष कुछ 1 बिलियन लोगों का हुआ करता था, और हम ये बोलते थे कि 20% ऑफ द ऑडियंस डिजिटल पहुंच सकता है. फिर वो नंबर बढ़ते गया. अब जो लेटेस्ट गूगल ने पब्लिश किया हुआ नंबर है वो है 800 मिलियन लोगों का, जो आज की तारीख में डिजिटल के माध्यम पे उपलब्ध है. और भारतवर्ष की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो आई थिंक 1.4 बिलियन ऐसे कुछ है. तो अगर आप 8 डिवाइडेड बाय 14 कर लो तो वो 60% तक तो पहुंच चुका है. तो अभी भी जो हेडरूम है डिजिटल के पास काफ़ी है ग्रो करने के लिए. बहुत जल्दी स्लो डाउन करेगा, लेकिन अगर आप चाइना देखें या यूएस देखें जहाँ पे 100% डिजिटल पेनिट्रेशन है, 100%.
प्रीटी मच क्लोज टू 100%। वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी काफ़ी स्कोप है। बट अब कहने वाली बात है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हमेशा से ब्रांड्स का जो डिजिटल बजट होता था वो पहले होता था कि भाई ये जो भी नॉर्मल बजट है उसका 2% बजट डिजिटल में डालता हूँ। मैं 2004 या 5 की बात कर रहा हूँ। वो लिटरली 2% बजट डिजिटल होता था। फिर उसके बाद 2 का 5 हो गया, 5 का 10 हो गया, 10 का 15 हो गया, 25 हो गया। अभी आज की तारीख में कुछ सारे ब्रांड्स हैं जो ऑफलाइन करते ही नहीं है, वो मात्र डिजिटल करते हैं। तो ये स्क्यू हो गया है। बट इफ़ यू हैव टू लुक एट द एड इंडस्ट्री स्पेंड, आज भी 55% स्पेंड डिजिटल हो पाया है। और अगर 2 साल पहले देखते तो शायद वो नंबर 50 से कम होता। तो ये है कि हाँ ठीक है, ऑफलाइन को पीछे छोड़ रहा है। बट अभी ऑफलाइन ऑनलाइन डिस्टिंक्शंस बहुत जल्दी ना ब्लर होने वाले हैं। इज़ दैट कहीं ना कहीं जब हम स्टार्ट कर रहे थे अपना बिजनेस, हम भी सोच के यही कर रहे थे कि भाई हमें अनबाउंडेड बाय मीडियम रहना है। और एंड देयरफॉर इफ समबडी आस्क्स यू आर यू इनटू डिजिटल एडवर्टाइजिंग, राइट नाउ द आंसर इज yes, but soon the question will become irrelevant because all advertising will be digital advertising. How will the offline medium get into digital advertising? मतलब वो तो वही रहेगा ना, या उसमें भी आपको लगता है एवोल्यूशन आएगा? फॉर एग्जाम्पल बाहर की आउट ऑफ होम मीडिया बोलते हैं हम जैसे। सर आप देख लीजिए कि टीवी एड्स पे टीवी स्पॉट टीवीसी जाती है, 30 सेकंड टीवी स्पॉट, और वो पीपल कीप सेइंग दैट द 30% टीवी स्पॉट इज डेड। वो अब तक मरा नहीं है, वो मरने भी नहीं वाला है, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हु स्टिल वॉच टीवी। लेकिन अगर आप देखते हो, अब मैं और आप कॉर्ड कटर्स हैं, हमारे घर पे डीटीएच कनेक्शन नहीं है, तो हम देखते हैं हॉटस्टार, जियो सिनेमा। अब जियो सिनेमा पे लिए टीवीसी बन रही है, तो टीवी है ना, लेकिन वो स्मार्ट टीवी बन गया, तो उसकी एड तो अभी वो एसेंशियली एक वीडियो सर्व हो रहा है ना आपको। तो क्या टीवी देखते हैं? हाँ, आप वो क्लासिकल टीवी नहीं देखते, लेकिन आप टीवी तो देखते हैं ना। तो अब बस वो डिजिटल के थ्रू टीवी देख रहे हैं, मतलब तो कोई बात नहीं, टीवी है तो टीवी तो रहेगा ना। अब वो टीवी क्या वो डीटीएच के थ्रू आएगा, या टीवी क्या वो इंटरनेट के थ्रू आएगा, वो चेंज हो सकता है। तो बेसिकली मीडियम तो फिर भी रहेगा, मतलब वो इसलिए वो ऑफलाइन ऑनलाइन डिस्टिंक्शन करना बहुत मतलब। बट ऑनलाइन इज स्टिल मेजरेबल द इम्पैक्ट डायरेक्टली। हाँ जी, ऑफलाइन का मेजरेबल नहीं होता नॉर्मली। हाँ सही बात कह रहे हो आप, सही कह रहे हो कि ऑनलाइन का इम्पैक्ट मेजरेबल नहीं होता है, ऑफलाइन का। हाँ, ऑफलाइन का इम्पैक्ट मेजरेबल नहीं होता है। होते हैं वो ये कुछ टैम वाले लोग सेट टॉप बॉक्स के ऊपर कुछ लगा देते हैं जिससे वो मेजर करते हैं कौन उससे, और वे रिप्रेजेंटेटिव डेटा देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू मेजरमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, राइट, ऑनलाइन और ऑफलाइन में फ़र्क इतना है कि जो ऑनलाइन है वो उसमें एट्रीब्यूशन है, ऑफलाइन में एट्रीब्यूशन वीक है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि मैंने ये ऐड चलाई और ये ऐड को क्लिक करके किसी ने कुछ खरीदा, और वो एट्रीब्यूट हो सकता है कि मेरी वो वाली ऐड से इस बंदे ने ये प्रोडक्ट खरीदा, और मेरी वो वाली ऐड जो उस बंदे ने 5वीं बार देखी थी तब जाके खरीदा। तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन वेरी वेरी शार्पली डू। एंड ऑल्सो इट्स लाइक यू नो, ये क्रिकेट और फुटबॉल का फ़र्क है, विच इज़ अ वेरी वेरी टेंजेंशियल थिंग दैट आई एम सेइंग, कि जो क्रिकेट मैच होती है ना, मैच ख़त्म होने के बाद भी आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें इतनी सारी इंटरेस्टिंग डेटा होता है कि फलाने ने सेंचुरी मारी, उसने इतने बॉल में मारी, उसके इतने डॉट बॉल थे, उसका ये था, उसका वो था, इसका रन रेट इतना है, उसका ये है, उसका वो है। एंड उसमें आप मतलब मैच ख़त्म हो गई फिर भी उसके बाद आप घुस सकते हो, और मतलब उसको 15,000 तरीके से एनालाइज कर सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो, राइट। वेराज एंड देयरफॉर ना, मतलब अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया, इंडिया जीत गई ना, तो इतना कहना कि इंडिया जीत गई ये काफ़ी नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कौन खेला, किसने कितने बनाए, किसने कितने रन दिए, ऑल ऑफ दैट, राइट। सो व्हाट डिजिटल अलाउज यू टू डू इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ गेट इनटू सम ऑफ दोज pieces of information, and if you enjoy looking at data, parsing data and sort of optimizing, digital can be optimized. ठीक है, that is one sort of thing digital. Cricket is like football. मैच हो गया मैनचेस्टर सिटी और यूनाइटेड के बीच में, मैनचेस्टर सिटी जीत गया, 3-0 जीत गया। अब इससे आगे ना आपको कोई और कोई स्टैट नहीं है, कोई एट्रीब्यूशन नहीं चाहिए। अगर आपको पता है कि 3-0 जीत गया तो 3-0 पे कहानी खत्म है ना। फिर आप होता है उसके अंदर भी पोजीशन के नंबर्स हैं और सक्सेसफुल टेक ऑन्स और सक्सेसफुल ड्रिबल्स कंप्लीटेड, बट अ वेरी 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 स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल इवन केयर अबाउट दोज नंबर्स, एंड रिप्लेबिलिटी इज नॉट देयर। मतलब फिर आप हाईलाइट ही देख सकते हो, पूरा गेम नहीं देख सकते वापस आप। तो
So TV is like that, where data analysis is harder and probably less measurable. But कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना that we kind of get caught up in all sorts of advertising metrics. The true metric is what sort of real world impact that has driven, right? It's like लोग TV पे क्यों पैसा खर्च करते हैं, और आप बोलते हो ये तो मेजर भी नहीं होता तो करते क्यों हैं? असली मेजरमेंट ना ये नहीं है कि कितने व्यूज़ आए, कितने एंगेजमेंट हुए, कितने लाइक्स हुए. आप पॉडकास्टर हैं, शायद आपके लिए वो व्यूज़ महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका प्रोडक्ट ही पॉडकास्ट है, आपका प्रोडक्ट और कुछ नहीं है. लेकिन जो दूसरा बंदा है जो फेविकॉल बना रहा है, उसको अल्टीमेटली फेविकॉल बिकवानी है. बिल्कुल. तो जब वो टीवी ऐड करते हैं और उस टीवी ऐड के रिस्पॉन्स में जब उनकी सेल्स 20% बढ़ती है ना, उनको उस मेट्रिक के अलावा और कोई मेट्रिक नहीं चाहिए. At the end, it's the sale that matters. तो एट द एंड इट्स द बिजनेस आउटकम दैट मैटर्स, चाहे वो सेल हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो माइंड सो अल्टीमेटली माइंड शेयर गेन हो या जो भी हो. तो हाँ, माइंड शेयर गेन्स के भी मतलब आप ब्रांड लिफ्ट स्टडी करा लो या मतलब ब्रांड ट्रैक कराते हैं ब्रांड, उसमें आपको पता चलता है कि भाई मेरा टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल स्कोर बढ़ा कि नहीं, मेरा लिफ्ट आया कि नहीं, मेरा तो ये सारी, तो ये जो ब्रांड साइड मैट्रिक्स है ना, they always will trump any other metric on the consumer side. मतलब आप देखते हो हर कोई एजेंसी कोई ना कोई ऐड बनाती है और फिर उसका एक सुंदर सा केस स्टडी वीडियो बनाती है और बोलती है 5 मिलियन लाइक्स, इतने व्यूज, इतना कुछ. तो मतलब वो ठीक है, वो अच्छा लगता है, बट जो असली मेट्रिक तो है ना कि भाई उस बंदे को क्या मिला, चाहे सेल कितनी मिली, लिफ्ट कितना आया, जो मार्केटर का जो गोल था क्या वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ. और क्योंकि वो आज की तारीख में प्रिंट एड्स पूरा कर रही हैं, टीवी एड्स भी पूरा कर रही हैं, तो तब जब तक वो चलेगा तब तक वो चलेंगी. आई एम श्योर मेजरेबिलिटी के लिए कोई हैक्स या कोई सॉल्यूशंस निकलेंगे, बट दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर. आई थिंक इफ समथिंग इज इफेक्टिव, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. आई विल आस्क यू वन लास्ट थिंग अबाउट इट, राइट? हाँ जी, प्लीज. अभी आपने व्यूज और लाइक्स की बात कर रहे हैं हम. जी जी जी. व्यूज और लाइक्स अपेरेंटली नई दुनिया आ गई है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जी, क्लोजली रिलेटेड टू this pseudo world where we push some narratives and influencers obviously drive our narratives, be it whatever the objective of the campaign would be. Is influencer marketing getting into a area where it is becoming more of a scam than a real world problem solver? It's the opposite actually. Okay. It is becoming less of a scam. What is the scam aspect, right? स्कैम एस्पेक्ट ये है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं बताता हूँ यार कि मेरे वीडियो तो बहुत चलते हैं, मेरी एंगेजमेंट तो ऐसी है वैसी है. इस पर दो तरीके हैं बाय द वे, दो साइड है स्कैम की. हाँ जी. वन ऑफ द स्कैम इज दैट यू pretend to the audience that some brand is really good for them, but it is actually not, because obviously you're getting paid. नहीं तो मार्केटर का नुकसान कैसे हुआ, तो कंज्यूमर का नुकसान. कंज्यूमर का नुकसान. I'm talking from the both side of it. ठीक है. कंज्यूमर का नुकसान हुआ वहाँ पे. एंड एक होता है कि इन्फ्लुएंसर while working with a marketer or a brand जी is obviously not going to be loyal for that particular brand forever, right? मतलब आज मैंने बोल दिया कि Hyundai की कार बढ़िया है, कल मैं 2 दिन बाद बोल रहा हूँ मारुति की गाड़ियाँ बढ़िया है जी. राइट? तो दोनों एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं. हाउ डू यू हैंडल दैट? तो देखो यार, पब्लिक मेमोरी काफ़ी लिमिटेड होती है और जैसे ही हम इस मोर कनेक्टेड, मोर एक्टिव, ऑलवेज ऑन, हमेशा एक स्क्रीन है आपके सामने, मतलब आपको अगर एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको हर हफ्ते बताता है कि आपका स्क्रीन टाइम इतना है. हमारा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये एक्सपेक्ट करना कि मतलब कोई एक्सक्लूसिविटी हो, ये गलत एक्सपेक्ट करना है. और अगर आप देखोगे तो इवन ऑफलाइन पहले आमिर खान पेप्सी बेच रहा था, अब वो कोक बेच रहा है, कल कुछ और बेचेगा. आप सारा अली खान को ले लीजिए, एवरी मार्केटर इज आफ्टर हर. वो कभी वो पल्प का कुछ, पल्प नहीं क्या, देयर इज अ सम ई-कॉमर्स कंपनी और सम स्किन केयर प्रोडक्ट, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है. एवरीबडी इज लाइक काइंड ऑफ, इवन द मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटीज आर चेंजिंग द ब्रांड्स दैट दे एंडोर्स एवरी 1 or 2 years. So you are, as a marketer, you are okay with that? ऑल मार्केटर्स आर ओके विद दैट, क्योंकि देखो जब तक मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की बात है, वो उनका शेल्फ लाइफ 1-2 साल का होता है. क्योंकि टिपिकली आप एक किसी मेन स्ट्रीम सेलेब को साइन करते हो तो 1 year के राइट्स होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, वरना आप ज़्यादा के कर लो. When it comes to influencer, when an influencer runs campaigns for you, हम एक नॉन कम्पीट का अग्रीमेंट साइन करते हैं टिपिकली इन्फ्लुएंसर्स के साथ, बट वो 2 महीने का होता है.
तो बस वो शेल्फ लाइफ कंटेंट की अलग है। जो आप टीवीसी बना रहे हो वो टीवी पे ज़्यादा टाइम चलने वाली है, तभी उसके ऊपर 1 ईयर का नो कम्पीट है। और जो आप रील बना रहे हो वो ज़्यादा टाइम नहीं चलने वाली है, तो उसमें 2 महीने का है, किसी में 1 महीने का है। तो ये तो आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा कि कितना क्या करेगा। तो इसमें कोई स्कैम नहीं है, ये सब कुछ कंसेंशुअल है, सब कुछ पूछ के हो रहा है। दूसरा स्कैम ये है कि भाई क्या इन्फ्लुएंसर अपने कंज्यूमर को गलत प्रोडक्ट सजेस्ट करे तो कंज्यूमर का नुकसान होगा। तो अल्टीमेटली अगर इन्फ्लुएंसर कंज्यूमर का नुकसान करवा रहा है, आपका एक फेवरेट इन्फ्लुएंसर है जिसने आपको कुछ रेकमेंड किया कि ये बहुत बहुत प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, अच्छी है, ब्ला ब्ला ब्ला, और आपने जाके खरीद लिया, प्रोडक्ट घटिया निकली और मतलब उससे आपका कोई नुकसान हो गया, उसने आपको बोला कि ये रेजर ब्लेड खरीद लो, उससे आपको कट गया या जो भी हो गया, तो इवेंचुअली आप बोलोगे भाई कि ये बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसकी तो रिकमेंडेड चीज़ तो मैं नहीं खरीदने वाला। तो कहीं ना कहीं ही लूज यू एज एन ऑडियंस। तो वो भी रिस्क ले रहा है एक तरीके से, तो वो भी ही कांट, नोबडी कैन गेट अवे विद एनीथिंग इन टुडेज वर्ल्ड। तो इन 2 एस्पेक्ट्स से तो कोई स्कैम नहीं हो रहा है। जहाँ पे स्कैम हो रहा था या पहले होता था वॉज द आइडिया ऑफ पिकिंग द गेम ऑफ पिकिंग इन्फ्लुएंसर्स, कि किसको चुने, किसको लें। इसको ले लो ये बहुत बढ़िया करेगा, इसको ले लो ये अच्छा नहीं करेगा। तो ये सारा गेस वर्क होता था। बट पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, I mean the guesswork is completely out of it. There are tools which will tell you that जब ये इन्फ्लुएंसर, और ये इन्फ्लुएंसर के खुद का दिया हुआ डेटा नहीं है, there are third party tools which you can use to analyze. अब उसके अंदर भी AI शेयर आ गया है कि वो AI भी आपको बता देता है कि भाई इसने क्या, अगर आप इसके साथ आप इस प्रकार का वीडियो बनाते हो तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। बट AI को रहने देते हैं, AI और बहुत कुछ करता है। बट इवन जो हार्डकोर जो टूल्स विद रेगुलर एनालिटिक्स एंड डेटा, दे विल टेल यू एज टू who is the influencer's audience. They will tell you कि ये इन्फ्लुएंसर जम्मू एंड कश्मीर में चलता है या अहमदाबाद में चलता है। अगर इसकी 100% ऑडियंस है तो उसकी 20% ऑडियंस गुजरात से है, इतना % ऑडियंस इसकी यहाँ से वहाँ से है। तो उसके ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स आपको पता चल रहे हैं, उसके ऑडियंस के साइकोग्राफिक्स आपको पता चल रहे हैं कि मेल है, फीमेल है, कितने हैं, क्या है। उसके ऑडियंस के इंटरेस्ट तक आपको पता चल रहे हैं। अगर हो सकता है कि आप एक इन्फ्लुएंसर हो, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, हम दोनों की ऑडियंस 70% मेल है, लेकिन मेरे को ये पता चल जाएगा कि जो आपके वाले बंदे हैं वो स्पोर्ट्स देखते हैं, मेरे वाले बंदे हैं जो फाइनेंशियल कंटेंट देखते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन और सारा डेटा अवेलेबल है। तो अभी जो आप एक डिसीजन ले रहे हो ना, आपको एस्टिमेटेड रीच, एस्टिमेटेड एंगेजमेंट, जितने सारे मैट्रिक्स जो लोगों को पसंद हैं वो सारे आप पहले से मिल जाएंगे, उनके साथ आप काम कर रहे हो। तो वो सीन सॉर्टेड है। प्लस देयर इज ऑलवेज एन आई टेस्ट दैट यू कैन ऑलवेज डू कि भाई देख के कैसा लग रहा है, ये भी तो है ही आपके पास में। तो अभी गेसवर्क सारा जो है हट चुका है इसके अंदर से। तो अब इन्फ्लुएंसर ये हो गया है कि किसी और मीडियम की तरह हो गया है। आप आज की तारीख में जब आप मान लीजिए एक पीस ऑफ कंटेंट के पीछे मीडिया लगाते हो, मान लेते हैं हम इंस्टाग्राम पे आप एक वीडियो डालते हो और जो वो वीडियो है उसको आप बूस्ट करते हो या प्रमोट करते हो या बेसिकली मीडिया बजट उसके पीछे लगाते हो, और वो वीडियो एक्सपोज होता है एक सर्टेन ऑडियंस सेट को। तो आपको बहुत ही क्लियर होता है कि आपको पता चल जाता है कि ये 20,000 रुपये लगाने पर ये जो वीडियो है वो 1 लाख रुपए लोगों तक पहुंचा। तो मेरे को एक जने तक पहुंचने के लिए मेरे को 20 पैसे लगे। अब उन जब 1 लाख रुपए तक लोगों तक पहुंचा तो वो बेसिकली शायद 50,000 लोगों ने प्ले किया, तो मेरे को 50 पैसे लगे एक वीडियो फुल किसी को दिखाने के। तो अल्टीमेटली द मेट्रिक्स दैट टेंड टू मैटर आर कॉस्ट पर रीच, कॉस्ट पर व्यू, कॉस्ट पर एंगेजमेंट, स्पेसिफिकली इन द इन्फ्लुएंसर कॉन्टेक्स्ट और रनिंग अ वीडियो ऑन द इंटरनेट कॉन्टेक्स्ट। कॉस्ट पर रीच देखोगे, कॉस्ट पर एंगेजमेंट देखोगे, कॉस्ट पर व्यू देखोगे, और किसने देखा ये देखोगे। तो इफ किसने देखा इज सॉल्व फॉर, क्योंकि अगर आपका फेसबुक पे चलाते हो तो आपको एक बहुत शार्प डेमोग्राफिक टारगेटिंग वैसे ही मिल जाती है। इन्फ्लुएंसर के केस में आपके पास टूल्स है, थोड़ा सा फजी है वो टूल्स में, मतलब वो टूल प्रेडिक्ट कर सकता है, आपको एक्यूरेट नहीं दे सकता। फेसबुक तो आपको बोलता है कि मेरे को ऐड अगर गुजरात में दिखाना तो गुजरात में ही दिखाएगा। तो वो एक अंतर है। तो किसको दिखाना है, कितने में दिखाना है, यही बात है। इन्फ्लुएंसर का जो कॉस्ट पर व्यू होगा वो हमेशा महंगा होगा कंपेयर टू रनिंग अ वीडियो ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर, बट दैट कम्स विथ हायर एंगेजमेंट। तो अगर आपको इवैल्यूएट करना है तो आप कॉस्ट पर एंगेजमेंट, कॉस्ट पर व्यू पे देखोगे तो इन्फ्लुएंसर इज़ लाइक एनी अदर मीडिया चैनल। और जो आज की तारीख में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को एक तरीके से कर रहे हैं, नॉट दैट आज की तारीख में बहुत सारे ऐसा होता, पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे ब्रांड्स होते थे, उनको ना एक टिक मार्क करना होता था कि भाई हमने ये भी कर लिया। इन्फ्लुएंसर भी करते हैं हम लोग, तो वो जो करने के लिए करते हैं ना उनकी बात नहीं करते हैं, लेकिन जो तमीज़ से कर रहे हैं और जो एक्चुअली सेल्स ड्राइव कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, तो
उनके लिए ऑल दीज थिंग्स आर सॉल्व फॉर, तो वहाँ पे कोई स्कैम नहीं हो रहा। अमेजिंग, बहुत मज़ा आया मुझे साकेत आपसे बात करके। इट वॉज रियली रियली फन। मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप वी डिड जस्टिस टू योर टाइम। No, absolutely. This was fun. I think it's always happy to catch up with interesting people and have lovely conversations and probably, hopefully, make some friends along the way. Absolutely. So, absolutely my pleasure being on here. थैंक यू। लोगों को कैमरा पे बोल दो सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अच्छा लगा तो सर का जो पॉडकास्ट है इसका नाम है मैड ओवर ग्रोथ, और हो सकता है कि आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा अगर आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और स्पेसिफिकली ये एपिसोड कैसा लगा इसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं भी पढ़ लूँगा जाके। मेरा काम आसान हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।